In 1929, the world learned how fast money can disappear. Back then, chaos occurred through trading floors, paper flying, phones ringing, panic spreading. Today, it's all screens and apps, but the emotions still the same. Fear, greed, FOMO. The game evolved, but the rules didn't. You know that feeling right before a roller coaster drops? That mix of fear and thrill. That's the stock market minus the seatbelt. In 1929, the ride crashed. Today, it's smoother, digital, global, but still the same rush. Welcome to the Stock Rush. Let's learn how to stay on the ride and not fall off. Stock market. Two words, या तो वो आपको बहुत excitement देंगे या फिर it will terrify you. For some people, it's like money printing machine and थोड़े लोगों के लिए it's like casino जहाँ पे आप अपनी सारी savings lose कर देते हो faster than a Goa trip with your friends. चलो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. अगर मैं स्टॉक मार्केट बोलती हूँ या आप कभी भी स्टॉक मार्केट वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? केओस, स्क्रीन्स जहाँ पे सब कुछ रेड एंड ग्रीन है, या पीपल शाउटिंग बाय सेल लाइक इट्स एन ऑक्शन, या फिर वो थॉट आता है एक अंकल जो आपको हर शादी में बोलते हैं बेटा मैंने तुम्हें बोला था ना 2001 में ये वाला शेयर तुम्हें खरीद लेना चाहिए था. Well, for most beginners, they would think it's like casino, it's gambling, जहाँ पे थोड़े लोग तो पैसे कमा लेते हैं, but the truth is, most of them don't. But the truth is, it's not gambling, it's a system. And अगर आपको ये system अच्छे से समझ में आ जाए, you will realize that how in India it is the best way to build wealth, long term, very calmly and intelligently. Hi, I'm Tina Nandwani and this is Finora, a channel that finally talks about money the way we actually experience it. Messy, confusing, sometimes scary, but always present in our lives. So, in this video, we will decode how actually stock market works, what stock market is and how to start investing without feeling dumb or broke. Okay, let's strip the fancy words. अभी जितना फैंसी साउंड करता है जितना जार्गन साउंड करता है इट इज़ नॉट, इट इज़ वेरी सिंपल. सो स्टॉक मार्केट इज़ अ प्लेस जहाँ पे यू बाय एंड सेल द ओनरशिप ऑफ द कंपनी. सी ये पूरी कंपनी नहीं, ऑफ कोर्स द टाइनी पीसेस ऑफ इट. हर कंपनी छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड होती है एंड वो छोटे छोटे पीसेस को इट इज़ नोन एज शेयर्स और स्टॉक्स. ओके, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. इमेजिन टाटा मोटर्स. अब टाटा मोटर्स इज़ डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइनी पीसेस जिसको हम शेयर्स या स्टॉक्स बोलते हैं. अब वो करोर्स ऑफ टाइनी पीसेस में डिवाइडेड होती है एंड उसको हम शेयर्स या स्टॉक्स बोलते हैं. इमेजिन आप उसका एक पार्ट ले रहे हो, यू आर ओनिंग दैट टाइनी पीस ऑफ इट. दैट मीन्स आप उस कंपनी में यू आर जस्ट टेकिंग वन पार्ट एंड यू आर बीइंग अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी दैट सेल्स कार्स. सो अब ये आपके लिए इसका क्या मतलब हुआ? लाइक हाउ विल इट बेनिफिट टू यू? सो इट्स लाइक ओनिंग अ बेकरी इन योर कॉलोनी. अगर वो ज़्यादा केक्स बेचेगी तो यू विल बी बेनिफिटेड एंड इफ नॉट यू विल बी एट लॉस. सो इट्स लाइक यू आर बिल्डिंग योर वेल्थ, यू आर ग्रोइंग योर वेल्थ इफ़ द कंपनी राइजेज और ग्रोज. एंड इफ़ द कंपनी फॉल्स या फिर कंपनी का थोड़ा लॉस हो रहा है देन यू विल श्रिंक अलॉन्ग विद द कंपनी. सो stock market is basically the marketplace for ownership. It's like an Amazon for the companies. Instead of trading products, जो products का buy and sell होता है, instead of that, it's trading of pieces of the company. Here is a fact. Every share has a price determined by what people are willing to buy for it at any given moment. That's why the market keeps moving every second. But here's the catch. Owning shares doesn't mean you can barge into TCS headquarters and say that's my share. No, you just own a part of the company. मतलब आपका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है उस कंपनी में. You don't own the company. You just have a part of tiny profits and growth of the company. Now, let's talk fear. Why do some people avoid stocks? मतलब वो लोग इतना दूर क्यों रहते हैं? कई लोग बोलते हैं कि स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक्स नहीं करना चाहिए एंड कई लोग बोलते हैं दिस इज़ द वे जिससे तुम वेल्थ क्रिएट करते हो. बट मोस्ट ऑफ वो डर एंड फियर की साइड होते हैं. तो वाई इज़ दैट? बिकॉज दे ओनली सी द स्कैरी साइड. देयर अंकल लॉस्ट मनी इन 2008 एंड नाउ सेज बेटा स्टे अवे.
They read headlines like market crash wipes out 5 lakh crores in one day. Or they believe it's rich man's game with red, green screens all around and fancy suits. But the reality check is people lose money in stock market is because basically they treat it like Tinder. Swipe left, swipe right, chase excitement and get heartbroken. Now, you might wonder if companies are earning so well, they are earning so good profit and are growing, why do they need to sell shares to people? The answer is very simple. They raise money for growth. Let's say you own a bakery. Business is booming, but you want to expand. Open new outlets, hire staff, buy new microwaves. आपको उसके लिए ₹10 crores चाहिए. अब इसके लिए you have two options. Take a loan, pay interest at stress. This was option number 1. Option number 2 is sell part of your bakery to the public. Give shares, people invest money and now they become the co-owners. This is called an IPO, Initial Public Offering. It's a very fancy name, but इसका meaning बहुत simple है. The company says, hey world, we are growing. Do you want a slice? That means company अपनी कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रही है विच इज़ नोन एज शेयर्स और इट्स लाइक अ स्लाइस. इन्वेस्टिंग इन IPOs कैन बी एक्साइटिंग, येस, बट जो रियल मैजिक होता है दैट इज़ आफ्टर द कंपनी गेट्स लिस्टेड यू आर बाइंग द शेयर्स एंड होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सो दैट आपको एक्चुअल बेनिफिट हो उसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ से एंड द डिविडेंड्स. All these buying and selling and the exchanges doesn't happen on WhatsApp or streets. I know we wish it did, but it basically there are two main stock exchanges. One is NSE, the other one is BSE. NSE is National Stock Exchange and BSE is Bombay Stock Exchange. Think of these like Amazon or Flipkart for shares. They provide the platform, match buyers with sellers and ensure everything is transparent. No shady deals, no cash under the table. The exchanges handle all the paperwork digitally. And every company listed has a ticker name. Ticker name is like their nickname. हर कंपनी का एक शॉर्टकट नेम होता है जिसको हम टिकर नेम बोलते हैं या टिकर सिंबल बोलते हैं. Let's take few examples. Suppose Infosys, it's INFY. Reliance, it's RELIANCE. HDFC Bank के लिए it's HDFC Bank. So, knowing ticker symbol is like knowing a shortcut. Instead of typing full company's name, you can search, track and trade instantly. Now, here's the fun part. The main part of stock market कि market हमेशा up and down move क्यों करती रहती है, उसके prices हमेशा ऊपर नीचे क्यों move करते रहते हैं. So yes, it's basically because of demand and supply, but it's also by human emotions. अगर ज़्यादा लोग बाय कर रहे हैं द मार्केट प्राइसेस विल गो अप. इफ़ ज़्यादा लोग सेल कर रहे हैं द मार्केट प्राइसेस विल गो डाउन. बट मोर देन द ह्यूमन इमोशंस इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ न्यूज़, इकोनॉमी और एनी ग्लोबल इवेंट्स जिसकी वजह से द प्राइसेस में हैव डिटरमाइंड. लेट्स टेक एग्जांपल्स थ्रू टू सिचुएशंस. सिचुएशन नंबर 1, इन्फोसिस ने अनाउंस किया रिकॉर्ड प्रॉफिट्स एंड अब प्रॉफिट्स अनाउंस कर दिया है तो क्या होगा, द डिमांड विल इंक्रीज, बायर्स बढ़ जाएंगे एंड प्राइसेस विल शूट अप. सिचुएशन नंबर 2, ग्लोबल रिसेशन फियर्स. अब बिकॉज ऑफ द फियर क्या होगा, पैनिक सेलिंग होगा एंड प्राइसेस विल क्रैश एंड द मार्केट विल फॉल. स्टॉक मार्केट इज समटाइम्स लॉजिकल, समटाइम्स इट्स नॉट, बट मोस्ट ऑफ टाइम्स इट्स मूड स्विंग मशीन. थिंक ऑफ इट लाइक अ रोलर कोस्टर, अप्स एंड डाउन्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट यू कैन डिटरमाइन हाउ लॉन्ग एंड व्हेन टू स्टॉप द राइड. All stocks cannot be treated equally. Broadly, you will find it out this way. First, large cap stocks. Big, stable companies like Reliance, TCS, Infosys. It's less risky, steady growth and fewer surprises. Number 2, mid-cap stocks. It's medium-sized companies growing fast, moderate risk, higher growth potential. Examples we can consider like Zomato. Number 3, small cap stocks. Smaller new businesses, very high risk, high reward, but they can double or vanish quickly.
या तो वो आपके पैसे डबल कर देंगे या तो फिर इट विल वैनिश इट. Think of it like a family analogy. Large caps is like your stable parents. Mid cap is like your ambitious siblings. Small cap is like that cousin running a startup. Diversifying across these categories reduces your risk while keeping growth potential alive. Starting to invest is not that complicated. There are few steps that you need to follow and then you'll be through with it. Let's see. Step number 1, open a demat account plus trading account. You can use platforms like Zerodha, Grow, Angel One or HDFC Securities. Step number 2, link your bank account. Ensure smooth money transfer for buying and selling. Step number 3, do research. Use ticker tape, money controls, screener.in to check financials and performance. This is very important. You should know where your money to put in. Step number 4, start small. Even 1000 या 5000 is okay initially. Step number 5, diversify. 4 से 5 stocks across different sectors. You should diversify it. Banking के, FMCG, pharma or tech. Step number 6, think long term. Patience beats panic. Here's a tip for you. Automate SIPs and mutual fund if picking individual stock feels intimidating. Let's talk about the mistakes that almost all the new investors usually make in the beginning, and you can learn from it and actually avoid from the rookie heartbreaks. Number 1, following tips blindly. WhatsApp forward, Telegram groups or friends recommendation. They are the biggest trap. Let's take one example. आपके फ्रेंड ने बोला कि ये स्टॉक बाय कर लो, 1 महीने में डबल हो जाएगा. आपने 50,000 डाल दिया एंड मार्केट क्रैश हो गई. So the moral is always research or stick to the funds. Don't blindly follow the rumors. Number 2, timing the market. सबको ऐसा है कि buy at low and sell at high. It sounds so simple, right? But the reality is it's almost impossible even for the experts. आप example देखो एक. आप wait करते हो to buy stocks when prices drop, but they drop further. Or you sell in panic during a small crash. Time in the market beats timing the market. Number 3, no patience. Wealth doesn't grow overnight. अभी बाय कर लो, 1 महीने में डबल हो जाएगा. No. Compounding takes years. Example, आप इन्वेस्ट करते हो 1000 रुपये पर मंथ in an index fund and expecting a करोड़पति result in 2 years. ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं. Stick to the plan for 10 to 15 years. Number 4, panic selling. Market falls, it's very normal. तो थोड़ा टाइम दो. Short term losses are unavoidable. आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा होगा ही and you have to wait. Suppose March 2020 में कोविड क्रैश की वजह से सेंसेक्स fell around almost 40%. Many sold in panic. Those who stayed invested saw the market recover and even reach new highs within 12 to 18 months. Number 5, ignoring diversification. Putting all your money in one stock or one sector is risky. Like imagine करो आप buy कर रहे हो 10 packet of same flavor of Maggi thinking it's genius. Then the flavor gets banned. Disaster. Same with the stocks. Spread investments across sectors and types of assets to reduce risk. अलग अलग sectors में diversify करो. So the bottom line is avoid these mistakes and you are already ahead, 80% ahead of most of the beginners. So keep calm, stay consistent, diversify your portfolio and see the results. So next time someone says stock market is risky, tell them so is staying broke. Start small, stay consistent and let your money grow over time. See, देखो यहाँ पे है ना, patience is your superpower. Market उन्हीं को reward देती है जो who stick around for a long period of time. They stay consistent and not the ones जो chase करते हैं छोटे छोटे wins को and then they leave the market. Speaking of quick wins, here's a challenge for you. One company made billions in just 24 hours.
but most investors lost everything. Can you guess which one it was? Drop your guesses in the comments below. Let's see who knows their market story. So if this video finally made you understood what stock market is, at least the basics of it, so do hit the like button, share it with your friends who want to start investing but is scared of starting it, and subscribe to Finora, the channel where we actually explain you money the way we experience it. Your future self will literally thank you for starting today.